Hello students, welcome to another video series, and in this series we are going to cover quantitative aptitude practice questions for upcoming CMAT examination. And I know many students are looking for the good quality questions, so you can find these questions helpful. And if you really do, then you can connect with the classes and subscribe the channel and just share the video among your friends. So let's solve first question of the video, and ये question definitely level जो एग्जाम है उसी के आसपास के, राइट? तो सम ऑफ द क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर easy also. So there is a question that the ages of A and B are in the ratio 5:7. So there are two person, and let the I'll try to explain from basic method, right? So ages be let that is 5x and 7x. Now 5 years before, so whenever we are saying 5 years before, so we have to subtract 5 from both the ages, and their ages were in the ratio of 5:8. So there are another method also, but I'll try to explain from basic method, right? So if I take 5 common, or I just cross multiply also, so 40x minus 40 should be equals to 35x minus 25. So 5x equals to 15, so x is coming out to be 3. Okay, so it is asking that what are the present ages. So present ages is 5 into 3 and 7 into 3. So this is nothing but 15 and 21. So that was a easy question, I can say, right? Now moving ahead, so we have next question. 5 years before, the ages of A and B was in the ratio 3:5. 10 years before, or so 10 years from now, the ratio of ages of A and B is 5:6. So we have to find again the present ages, right? So it is asking that 4 years before. So suppose we are in the 2026, and 4 years before it was 2022, and 10 years from present it will be 2036, right? So if I assume anything like that, 10 years before, sorry, 4 years before, the ages were in the ratio of 3:5, so let it be 3x and 5x initially. Now if I add till the present ages, so there is a gap of 14. So I'll add 3x plus 14 and 5x plus 14 to get the age in 2026. So this is 5:6. So again just cross multiply them. So this is 18x plus 84 is that is 25x plus 70. So this is coming out to be 14 equals to 7x. So x का value 2 आ जाएगा. Now it is asking the sum of the present ages. So if I go for the ages in 2022, it is asking sum. So sum would be 8x in 2022. So this is 8 into 2, that is 16. But it is asking that present ages. So present will be 2026. So we have to add, that is 16 plus. इसमें दोनों के लिए हम क्या करेंगे, we will be adding 4 for both the person. So we have to add 8. So the answer of this question is 24. I hope it is clear, right? So sum of the ages in 2022 combined ages was 16, but when we are moving to 2026, so there is a gap of 4. So for every person the age has to be increased by 4. I hope it is clear, right? We have another question number 3. The ratio of present ages of A and B is 1:2. So this is 1k and 2k. And 5 years before, the ratio was 1:3. So 5 years before, we have to subtract 5 from both the ages. So this is k minus 5 ratio 2k minus 5. This is according to the question, it is nothing but that is 1:3. So this is 3k minus 15 equals to 2k minus 5. So k का वैल्यू 10 आएगा. तो अगर k का वैल्यू 10 आएगा, इट इज आस्किंग कि अभी इनका प्रेजेंट एजेस कितना होगा. सो देयर प्रेजेंट एजेस विल बी present ages of A and B. It is nothing but k and 2k. Means this k का value 10 है, तो 10 and 20. Now it is asking what will be the ratio of the ages after 7 years, right? So after 7 year, A will become 17 and B will become 27. So option number C इसमें correct है. I believe it is clear because we have to add 7 in both the ages, right? So moving ahead, we have another question from the
ratio and proportion. Ram's present age is thrice his son present age. So Ram and his son, so let the son be S. So Ram ka present age in 2026, that is present. So we can take any reference, right? So Ram का present age thrice है अपने son से, so let the son का present age be K, so Ram's का 3 will be thrice of K and 2/5 of the present age of his father. तो अगर हम राम के फादर की बात करते हैं तो राम की एज अपने फादर से 2/5 है, अपने फादर से 2/5 है, राइट? तो इसका मतलब अगर सोच के देखो कि राम की एज अपने फादर से 2/5 है, तो फादर की एज 5/2 टाइम्स हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट, राइट? सो व्हाट आई कैन से कि अगर मुझे फादर का एज निकालना है तो दिस इज 5/2, रिवर्स कर देंगे ऑफ 3k बिकॉज इट इज ऑफ राम। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज 3k एंड in the terms of ratio and this is 7.5k. आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो जो दादाजी हैं वो 7.5 टाइम्स है सन से, मतलब ग्रैंड सन से। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ऑल, तो इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज, एवरेज इज द सम. So this is 3k plus k plus 7.5. That is 3k plus k plus 7.5k. And for average, we have to divide it by 3 so that this is going to be 46, right? So as per the question, this is 4 and 11.5k equals to 138. Right. So what is the difference of the ages Ram father and Ram son? So definitely if I talk about the difference, so difference is of 2k, right? मतलब 2 का मल्टीपल होगा, so I need to check whether this is a multiple of 138. So this is 11.5k equals to 138. So k is 1380 divided by 115, because when I remove decimal we have to add extra zero on the numerator. So 13 5 that is 23 into 5. 23 into 5 is 115 and 23 into 6 is 138. So k का वैल्यू आएगा 12, k का वैल्यू आएगा 12. आई होप इट इज क्लियर. नाउ इट इज आस्किंग कि राम के फादर की और राम के सन की प्रेजेंट एज का डिफरेंस निकालना है. तो राम के जो पिताजी हैं उनका प्रेजेंट एज है 7.5 और उनको राम के सन का है दैट इज k. सो इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस, so their difference is nothing but 7.5k. तो 6.5k. now we have the value k का वैल्यू 12, तो 6.5 into 12, so this is going to be that is 78 हो जाएगा. You can multiply them, right? तो 65 plus 13 that is 78. So option number C correct है. I hope it is clear. Now moving ahead, we have another question. ये थोड़ा algebra touch हो गया यहाँ पर. a cube minus b cube, it is 208 and a minus b is 4. So it is asking that a plus b का square minus ab का value आपको calculate करना, right? So there are many possible, I can say, solutions. So we can put the elimination method also, substitution also. But if you try to remember the a cube minus b cube, it is nothing but a minus b, that is a ka square plus b ka square plus ab. This is 208. So a minus b is 4 actually. So this is 4 times of a square plus b square plus ab. So this is 208. So I can definitely say a square plus b square plus ab is nothing but that is 52, right? Now if I look at this expression, so if I just open it, so you'll be surprised that we are very close to the answer. This is a square plus b square plus 2ab and this is minus ab. So this is a square plus b square plus ab. Still we are getting the same result. I hope it is clear. So that's why it is not like this value putting. थोड़ा सा आपको efforts लगाने पड़ेंगे so that you can reach to the answer in easy manner. So 52 is the right answer. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. We have another question that ये भी अच्छा क्वेश्चन है. x minus 5 का क्यूब, x minus 6 का होल क्यूब, x minus 7 का होल क्यूब equals to thrice of x minus 5, x minus 6 and x minus 7.
So there is one important relation you must know, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. अगर ये जीरो है, और आई कैन से इफ a plus b plus c इक्वल्स टू जीरो होता है, देन अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ abc होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट, very important result. So now if I explore this option, so it is already saying that these are the sum of the cube of three numbers and this is equals to thrice the same number. So I can definitely conclude that their sum should be 0, means x minus 5 plus x minus 6 plus x minus 7 equals to 0. So this is equals to that is x का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा. Now it is asking for this x, so 6 is the correct answer. Or what you can do, you can go by the option. हाँ, तो आप option putting से भी कर सकते हैं. Now next question we have, AB and AC are the two tangents to a circle whose radius is 6 centimeters. So we have a circle and we have two tangents drawn from the external points, that is AB and AC, and the radius is 6. So if I join these points, the tangent point kissing points, this is 6 radius, right? If angle BAC, this is 60 degree, so what is the value of square root of AB square plus AC square, right? तो वेरी इजी यार, देखो अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करते हो सेंटर से, so there is a one important property in right angle triangle which you must remember. If we have angle 30 degree, so whatever be the value of 30 के सामने होगा, so another angle will be 60 degree because one has to be right angle 90 degree. तो अगर 30 के सामने कोई भी नंबर है तो 60 के सामने उसका रूट 3 टाइम्स आएगा और हाइपोटेन्यूज विल बी 2k. दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट. एंड सिमिलरली इफ टू एंगल्स आर इक्वल 45 45, so this is k, then hypotenuse will be k root 2. Huh? These two results you must always remember, right? So based on this property, if I go by the property, so the angle will be bisected into two equal part, that is 30 30. So 30 के सामने 6 है, तो यहाँ पे आपको my mistake, and that will be ये 90 बनेगा दोस्तों और ये बनेगा 60, राइट? तो एज आई टोल्ड यू कि जो 60 के सामने बनेगा 6 रूट 3 बनेगा और यहाँ पे भी कितना बनेगा 6 रूट 3 बनेगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. ऑफकोर्स बोथ हैज़ टू बी सेम, ए बी एंड ए सी ऑलवेज इक्वल होते हैं. सो दिस इज 6 रूट 3 का स्क्वायर, 6 रूट 3 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट. तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ 6 रूट 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट करेंगे. तो यहाँ से आप देखोगे कि 6 रूट 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रूट 2 बचेगा. एंड इफ़ यू सॉल्व दिस इज 6 रूट 6. आई होप इट इज़ क्लियर. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री दैट इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल. Okay, so we have two circles. There is a right angle triangle. We have two circles and both are touching each other. And if we look at the bigger circle, so it is also touching all three sides of the triangle. So there is a property that if a circle is touching all three sides of the triangle from interior, so this circle is known as the in circle. इसको बोलते हैं हम इन सर्कल. तो इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज एरिया अपॉन द सेमी पेरीमीटर, दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है और यहाँ पे भी दोस्तों आपको सेमी पेरीमीटर लेना है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, राइट? तो ये है. तो क्वेश्चन बोलता है आपसे कि जो क्वेश्चन दैट इज जो रेडियस है छोटे वाले का 2 है, तो आपको बड़े वाले का रेडियस कैलकुलेट करना है, राइट? You have to calculate the radius capital R. This angle is 60 degree, right? So I'll tell you one important result that
an important result that so I tell you some important result that whenever we have a triangle, just very interesting property we have. So whenever we have triangle of any shape, right, and this angle is 60 degree, and in front of 60 degree, if we are making some sort of circles and all are touching each other, it can be of एनी नंबर, राइट. आप कितने भी सर्कल इसमें बना सकते हैं, दो बहुत ही गंदे सर्कल बने हैं, आई अपोलोजाइज फॉर इट, बट द लॉजिक इज दैट इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इज आर एंड रेडियस ऑफ द सेकंड इज थ्राइस ऑफ आर एंड द रेडियस ऑफ द अनदर वन दैट इज थ्राइस ऑफ दिस वन, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. अगर आपको ये क्वेश्चन पता है या प्रॉपर्टी पता है तो डेफिनेटली इसको डिकोड करना बहुत आसान है. दूसरी बात कि अगर आप इस वर्टेक्स को इनके सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सो दिस विल बी कोलिनियर, राइट. ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में आएंगे. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट. सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी आई कैन कंक्लूड दैट वी हैव 60, दिस रेडियस इज 2, सो ऑफ कोर्स आर इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ 2. तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, दैट इज 6 इसका राइट आंसर है, अल्टीमेट सॉल्यूशन, राइट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So we have another question. Two numbers are in the ratio 4:5. That is A and B are in the ratio 4:5 and their SCF is 16. Okay, so just understand that whenever we have two numbers, the product of the number should be equals to the LCM of A and B, the SCF of A and B. उनका product के equal होता है. The product of the number should be equals to the product of LCM and SCF. बहुत important है, right? So now it is saying that two numbers are in the ratio of 4 and 5 and their SCF is 16. तो SCF अगर आपके पास 16 है तो I can say the number should be multiple of 16. So number should be multiple of 16. So and also they are to be in the ratio of that is 4:5. So अगर आप SCF को 16 लेते हैं तो let the numbers be 16x और 16y. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट. बिकॉज 16 तो कम से कम उसमें आएगा कॉमन पार्ट में, उसके बाद एक्स वाई जो है वो को प्राइम होंगे. एक्स वाई क्या होंगे? को प्राइम होंगे, राइट. तो नाउ इफ द रेशियो ऑफ दैट इज 16x 16y इट इज़ नथिंग बट 4:5. सो आई कैन से ये 4 और 5 का रेशियो मेंटेन करेंगे एक्स एंड वाई, राइट. चलो ये भी समझ में आ गया. ओके, नाउ इट इज़ आस्किंग के थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा. हाँ, तो एक्स अपॉन वाई भी 4:5 का रेशियो मेंटेन करेंगे. तो सम ऑफ दीज टू नंबर्स बताना, राइट. इट इज़ आस्किंग कि इनका नंबर्स का सम बताना है, ठीक है. नाउ अगर हम सम को देखते हैं, सोच के देखो कि ये अगर दो नंबर का सम 16 है, मतलब दो नंबर का सम 4:5 है, तो उनका जो सम होगा वो 9 दे रखा है ना, तो 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए. तो 9 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, राइट. तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 एक आंसर हो सकता है, राइट. अब इसको वेरीफाई थोड़ा करते हैं, राइट. आई ट्राई टू वेरीफाई इट. सो नाउ एज आई टोल्ड यू कि अगर इनका SCF 16 है तो वो जो नंबर्स हैं वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए. दूसरा नंबर 16y मैंने अज्यूम कर लिया, 16x और 16y. सो नाउ इट इज़ आस्किंग कि आपके पास अगर इनका सम करना है तो सम हैज़ टू बी 16 टाइम्स ऑफ x और 16 टाइम्स ऑफ y. तो 16 विल बी कॉमन, तो x प्लस वाई. सो आई कैन बी वेरी श्योर कि अगर हम इस 6 नंबर्स को देखेंगे सम को तो 16 का मल्टीपल बनेगा. तो बाय द ऑप्शन ऑल्सो 16 का एक ही मल्टीपल है, बट सी के पास एक और चांसेस है कि वो बन सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक और पंगा है कि जो x है और जो y है वो 4:5 का रेशियो भी मेंटेन करते हैं, राइट. सो दे हैज़ टू बी 4k और 5k. तो इनको अगर हम सम करेंगे सो दैट विल बिकम 9k. तो यहाँ पे 144k. अब k का वैल्यू 1 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, बट बाय द ऑप्शन इफ़ आई कैन से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 144. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो इस प्रॉपर्टी को अभी हम आगे यूज़ करेंगे LCF LCM वाले को.
और एक और तरीका इसको सोचने का कि जैसे आपने बोला है कि अगर एस सी एफ 16 है, इसका मतलब दोनों नंबर 16 का मल्टीपल होंगे, यही तो मतलब है। तो अगर आप इस नंबर्स को, इसको बी को 4k और 5k लेते हैं, तो इनका एस सी एफ अगर 16 है तो कम से कम मुझे 16 बनाना पड़ेगा। तो 16 बनाने के लिए दोस्तों 4 इंटू 4 करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। अब 5 में तो देखो 16 नहीं है, पंगा ये है कि 5 में 16 बाई 5 के है ना। तो अगर मुझे एस सी एफ को 16 करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, के हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 16, भाई के को मल्टीपल होना पड़ेगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, दैट्स वाई आई कैन से कि यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो एटलीस्ट कम से कम आपको 16 रखना पड़ेगा। तो 4 इंटू 16 पहला नंबर आ जाएगा और दूसरा नंबर आ जाएगा 5 इंटू 16। सो दैट इज़ 64 प्लस 80, 144, राइट, 144 करेक्ट है। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। नेक्स्ट, एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ द टू नंबर इज 6 एंड 5040। तो एस सी एफ इज 6 एंड एल सी एम इज 5040। वन ऑफ द नंबर इज 210। तो आपको सेकंड नंबर निकालना। सो आई टोल्ड यू जस्ट द प्रॉपर्टी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर शुड बी इक्वल टू द एल सी एम एंड द एस सी एफ, राइट, एस सी एफ और एल सी एम। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर दैट इज 210 इंटू बी शुड बी इक्वल टू 6 इंटू 5040। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बी इज नथिंग बट 504 इंटू 6 डिवाइड बाई 21। सो 3 2 जा 3 7 जा 7 7 जा 7 2 जा। तो बी का वैल्यू 144 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। वी हैव अनदर क्वेश्चन। देयर इज अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा एंगल दे रखा है, दैट इज 10 अल्फा। जस्ट अंडरस्टैंड 10 अल्फा है यहाँ पे, आई थिंक कुछ टाइपिंग एरर, ठीक है। तो ऐसा है कि एक अल्फा एंगल आपके पास बनाती है एक लैडर जिसमें 10 अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो 10 you know that is perpendicular upon base. So if I consider this alpha, so this is going to be the perpendicular and this is going to be the base, which is nothing but 4, right? तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ऑफकोर्स ये कितना हो जाएगा बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, दैट इज 5, राइट। तो हाइपोटेन्यूज विल बी 5. नाउ इट इज सेइंग दैट इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे, तो यू वांट टू से कि जो 4 है इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं इसको 3x 4x और 5x मान लेता हूँ, तो 4x की वैल्यू 5 दे रखी है, तो x का वैल्यू 5/4 आ जाएगा। तो आपसे बोलता है लैडर की लेंथ निकालनी है, तो 5 इंटू 5/4, सो 25/4 विच इज़ नथिंग बट 6.25। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। From the top of 75 meter high tower, the angle of depression of the 2 points P and Q on the opposite sides of the base of the tower on the level ground is theta and phi। मतलब 75 मीटर का टावर है और दो अलग अलग अपोजिट साइड्स पे आपने देखा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अगर आप इस लेवल को समझते हैं तो ये जो एंगल है ये डिप्रेशन एंगल है, ठीक है। तो एक थीटा एक फाई है। तो बाय द ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी ये फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा फाई, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। Now tan theta it is given to us 3:4, that is 3/4 and tan 5 is 5/8, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को समझता हूँ, दिस इज 3/4, ये एंगल 5 दे रखा है, बट ये जो वैल्यू जो दे रखी है टावर की हाइट तो 75 है। तो पॉइंट इज दैट कि 3 को आप 75 बोलते हो मतलब 25 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो बेस लेंथ आ जाएगी 100 आ जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ सिमिलरली ये जो पॉइंट पी एंड क्यू, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को समझता हूँ, ये एंगल आपने थीटा अज्यूम किया थीटा, सो दिस इज़ 5/8, बट 5 के लिए तो जो कॉमन हाइट है वो तो 15 ही है, तो इसको मतलब इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। सो दिस इज़ 120। नाउ इट इज़ आस्किंग कि इनका सम बताना आपको डिस्टेंस, तो 100 + 120 इज़ नथिंग बट 220। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो होपफुली यू एन्जॉयड द सेशन, और बाकी अभी और बहुत सारे सेशंस आएंगे फॉर CMAT एग्जामिनेशन। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।